are the dumb implementation जिसको हमने accelerate किया और हम उस क्योंकि वो it's not dumb, it's just good for parallelization. लेकिन single core पे उसकी एक different version बेहतर चल सकता है. So we need to, I particularly need to remind myself several times to have a fair comparison. Okay, CPU has a lot of capabilities too, and GPU has a lot of capabilities. So if I want to compare the two, I should optimize for both of them independently and then compare. Yeah, let's look at architecture diagrams. I used to assume कि सबने देखी होती हैं, but I think even if सबने देखी होती हैं, they're worth looking at again and developing an appreciation for. कोई प्यारी सी तस्वीर ढूंढ लेते हैं हम. ये अच्छी लग रही है मुझे. i5 कोई मजायका तो नहीं i5 को देखने में. i7 Vale. Sorry, Vale is okay in Spanish. So, diving deep, गहराई में ले जाएगा. I would go like this instead of like this, but it's okay. ये क्यों नहीं लोड हो रहे? CPU वाला तो फोन लोड हो गया. CPU वाला वेब पेज लोड ही नहीं हो रहा. शरारतें कर रहा है. Tiger Lake. Anyway, I just needed this image. Come on, इतनी सी इमेज है. ये लगता है सर्वर किसी ने अच्छा नहीं लिखा हुआ. So yeah, this is what a chip looks like from inside. It used to look like until this is i7, I guess. i5 or i7. There's a large portion which is a memory controller. इसका सिर्फ ये काम होता है कि DRAM से डाटा लेकर आना. Again, IO, PCIe की भी addressing memory controller ही करता है. Which includes signaling to DRAM. Bring me this address, write to this address, read from this address, etc. Managing virtual pages, all that kind of isolation stuff. Those are the basics that memory controller does for us. And then we have IOs. There are a lot of USBs and stuff. PCIe is the fastest interconnect we have.
nahi, NVLink is the fastest. But then again, NVLink, it does not go beyond PCI में slot में लग जाता है ना, NVLink में आपको PCP के अंदर integrate करना होता है चीज़ों को. So it is the fastest interconnect we have. Interestingly, innovation in network devices, it goes very hand in hand with कि PCIe की क्या speed है और A and B जो network की जो port है, physical research, like physics based research about कि उस पे कितनी speed से data रखा जा सकता है. So it's as much about those as it is about the actual logic of network card, which is very interesting. So we have these things जो कि हमें external connectivities देती हैं to display, memory, etc. And then we have cores जो कि actually compute कर रही हैं चीज़ों को. और इन cores में data जो है वो L3 में आता है पहले, which is a cache. L3 के बाद सबके पास अपनी अपनी L2 होती है, उसमें जाता है, फिर L1 में जाता है. This is like the memory hierarchy. That's understandable. सर ये PCIs की नॉर्मल स्पीड जो होती है, तो जस्ट लेट्स से कंपेयर हम इतनी बैंड का कार्ड लगाते हैं, हम PCI कार्ड को जो उसकी वो होती है मदरबोर्ड, तो लेट्स से कि हम इतनी बैंड का कार्ड लगाते हैं एंड इट इज फॉर वेरी मच स्पीड एज कंपेयर टू अगर PCI की स्पीड देखें तो वो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि PCI की स्पेस हो सकता है कि वो कम और नेटवर्क जो हम कार्ड लगा रहे हैं तो कुछ बहुत ज्यादा हो, तो हम कह रहे होंगे यार हमने तो इतनी बैंड लगाया था जो कि 100 गिग पे वर्क कर रहा था, बट एक्चुअली हमारे पास वो 10 गिग आ रही है, 20 गिग आ रही है, तो that is a limitation for PCI. A very regular problem that we face in our everyday lives. Like I work with NVIDIA, and the kind of cards I work on, I don't have them on site. उसका रीजन ये है कि मेरे पास कोई ऐसा ब्लेड ही नहीं है, सॉरी हम उनको ब्लेड कहते हैं, कोई ऐसी मेरे पास सिस्टम नहीं है जिसमें PCI Gen 5 हो, तो वो मुझे दे भी देंगे तो मुझे इसका कोई खास फायदा नहीं है. I should better access their systems. So a very genuine thing, it happens all the time कि PCIe becomes the bottleneck. So no, actually the motherboard becomes the bottleneck instead of that CPU and that RAM and exactly the interconnect, the interconnect which happens to be PCIe in this case, it is a bottleneck. आपकी HPC में हर चीज कनेक्टेड और कोहेरेंट होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, इवन डिवाइस ड्राइवर्स तक. आप मतलब ये तो आप ठीक एक लेवल पे कह रहे हैं ना, सेम केस होता है कि अगर आपने एक लाइब्रेरी पे और कॉल की है, दूसरे नोड पे कुछ हो रहा है, फर्क आएगा. तो आप यही चीज जो प्रोफेशनल डेल वो HPC कॉन्फ़िगर करने का वो चीज बात है. हर चीज आपकी वो एक कोहेरेंट होती है, तो सारी सीमलेसली काम कर रही है. हमारे साथ बहुत दफा हुआ है PCI 2 का हमें सर्वर मिल गया सस्ता, इतनी तक का मिल जाता है, और GPU लेटेस्ट 4 वो स्लॉट आ रहा है, तो वहाँ फिर आपकी कंप्यूट कैपेबिलिटी वो नहीं मिलती, फिर डीके होना शुरू हो जाएगी. और एट द एंड डिपेंड करता है बस फ्लो है, कैश फ्लो है, मतलब कोई ना कोई चीज फ्लो है, तो जितना आप स्मूथ कर ले. अभी हमने 10 गिग का इसलिए इतना रखा है, बाकी मशीन हमारे साथ नहीं, वरना हम इतनी पे भी जा सकते थे, लेकिन वो फायदा पे नहीं, बैकएंड पे हमारा एक. तो HPC में आपका ये जो हम कंक्लूजन में ये इंतजार था पहले, सॉरी. ओके, यूजुअली जो ना कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर ऐसे ही होते हैं कि डाटा कैश में आता है, कैश से कैश में जाता है, कैश से कैश में जाता है, कैश रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर से फिर कंप्यूटर होता है, फिर दोबारा कैश में आता है, कैश फिर कैश में जाता है, कैश फिर कैश में जाता है, कैश फिर DRAM में जाता है, DRAM से फिर डिस्क हो जाता है if needed. Yeah. So कंप्यूटेशन इतना सा एलिमेंट है, बाकी सारा डाटा मूवमेंट ही चल रही है. This is what GPU architecture looks like. Okay, is it visible? Masu, more or less.
Okay, so DRAM कनेक्टिविटी है CPU के अंदर, PCI लॉजिक है, we have memory controllers, और इनके अंदर we have our L2 cache जिसमें डाटा जा रहा है पहले. So पहले HPM में आएगा DRAM से, HPM के बाद ये L2 कैश में आएगा, L2 कैश के बाद इन सब की अपनी अपनी L1 कैशेज होंगी जो ब्लू सा नजर आ रहा है छोटा सा. सॉरी आई एम सॉरी, मुझे नजर नहीं आता कि क्वेश्चन कौन कर रहा है. HPM, अजय जी, HPM इज लाइक DDR4 मेमोरी टेक्नोलॉजी है, बट इट इज द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी आउट देयर. बहुत ही चिप स्पेसिफिक, पोर्ट स्पेसिफिक मेमोरी होती है, एनर्जी हंग्री बहुत होती है, लेकिन स्पीड अच्छी देती है. हाई बैंडविड्थ मेमोरी HPM. Yeah. If we look into each of these little boxes, okay, again यहाँ पर हमें L1 कैश में चीजें जाएंगी. सबकी अपनी अपनी कैश में जा रही है, जहां तक रजिस्टर फाइल तक डाटा मूवमेंट ही है. Then this green block does compute. Okay. So again here, like memory goes very deep. Processing कम है, memory movement बहुत ज़्यादा है. So we gotta save for that. We gotta keep considering that. If our code is perfectly parallelizable और GPU यूटिलाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब हम डेटा ट्रांसफर में बहुत टाइम ले रहे हैं. Sir, can you explain a little bit about NVLink? Sorry, कौन? NVLink के बारे में मुझे बता सकते हैं? Tell me a little about what is your exposure on NVLink. A little. अभी तक वो जो NVIDIA के वो जो CEO की वीडियोस होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि NVIDIA have NVLink connect करने का very fast. So NVLink is an interconnect. It is faster than PCIe, लेकिन in terms of distance वो scale नहीं करता. आपको उसको चीज़ों को board पे NVLink के through connect करना पड़ता है. And NVLink switches that they have been developing are awesome. They, even those switches are capable of some compute now. जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि डाटा शार्प टेक्नोलॉजी में स्विचेस में मूव करते हुए कंप्यूट हो रहा है, they have moved the same thing inside NVLink ताकि हर लेयर पे ही चीज की जा सके. तो reduction is a very normal thing that we do. सब पूरे बड़े से डाटा सेट में से हमने उसका मैक्स या मेन या और क्या होता है सम वगैरह निकालना होता है. We gotta again, what it is optimizing for while computing in a network is to reduce data movements. कि यार उसको मैं कहूँ जाके भेजूंगा, वो कंप्यूट करेगा, मैं खुद ही नेटवर्क से पास करते हुए ही कंप्यूट करके मैं जो एक कुछ ट्रांसफर्स है वो बचा लेता हूँ. काफी ट्रांसफर्स and that's the Apple the M1 and M2 that they did all the things in the same processor. That's like they have GPU, CPU, memory, all of the same SSD. Let's see. This looks better. बाकी सब पुल बुट है. ओके, इतना बड़ा जीपीयू लगाया हुआ. प्रोसेसर कहाँ पे?
M1 Max processor ARM है ये Huh? ARM है ये ARM Maybe he had to sleep on इसमें ईजा तो ARM चल रहा होगा Silicon is Apple, yes. We have LPDDR5. This is another form of memory जो कि low power है, phones में होती है and अब clusters में भी use हो रही है. Yep, they have GPU inside core. तकरीबन हर core में ये अब इस तरह के blocks आते हैं. But this is big. I haven't seen something like that. Or इसमें भी देखें तो we have like asymmetric cores, 8 cores एक किस्म की हैं, 2 cores एक किस्म की हैं. So you got to take care of all of that while programming your applications. और again इस GPU को भी access करने के लिए GPUs की limitations तो वही हैं कि इसकी यहाँ पे L3 कैश होगी या फिर शायद इन दोनों की combined L3 कैश हो, लेकिन L2 कैश अपनी अपनी होगी सबकी. L1 तो हर प्रोसेसिंग एलिमेंट की almost अपनी ही होती है. So again they have tried to reduce transfers as much as possible, but there's a point to which you can do that. Memory becomes a bottleneck in the end of the day. So NVIDIA के recent Grace Hopper एक Grace Super chip है और एक Grace Hopper chip है. It was right before Blackwell. So they're on the same board. This is Hopper. This is Grace, जो कि ARM core है. They are connected with NVLink, which is very high speed. और इनके ऊपर LPDDR5 memory soldered है. And the latencies are so fast that इसको feel भी नहीं होगा कि वो यहाँ से data ले रहा है या वो इसकी memory से data ले रहा है, which solves a lot of problems for these vendors. But still, computation is easy. Handling memory transfers, optimizing for them is the tough part. And we have a lot of things for that. Prefetchers, caches, etc. to come up with some techniques. Again, we should keep them in mind while we are working. अगर आप कोई GPU प्रोफाइल देखेंगे तो आपको bottleneck यही मिलेगा कि आपकी थोड़ी सी कंप्यूट होती है और फिर वो मेमोरी ट्रांसफर हो रहा होता है. Would be a nice view if you ever happen to see one. इसमें जैसे 1 to 8 bits हैं, तो इसी तरह GPUs भी different debate for 64 bit, 1 to 8, 2 bit. इनकी GPU की जो एक तो मेमोरी होती है, दूसरी का बिट रेट होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? I'm pulling out a visual to help us understand. यहाँ पर लिखा है हमारे पास FP64, FP32, N32. If you can see, I can see that. You can see that. उनके ब्लॉक साइजेस आप देखें, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे छोटा है. तो 64 बिट जो नंबर होता है उसमें काफी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होती है वो डाटा की, और साइंटिफिक वर्कलोड्स को वो एक्यूरेसी चाहिए होती है. लेकिन again 32 bits is the norm we used to have, but with AI workloads we are considering dropping bits for improving performance. Instead of dropping bits, we are making new formats. उनको हम B float कहते हैं. Yeah, 16-bit representation. Yeah, B floats. So B floats. There's a new it's not about dropping bits. It's a new representation. And they are in the new GPUs, Hopper and Blackwell.
So it is a trade-off between accuracy, जो आपका number represent कर रहा है, again उसकी जो granularity है, step between representing two rational numbers, वो change होगा if we keep reducing bits, और उसकी वजह से जो results हैं उनमें gaps, एक कंपटीशन में आपको पता है gap आता है, तो फिर मिसाइल्स भी काफी इस तरह, निशान साहब मेरा ख्याल है डिफेंस सिस्टम से काफी इशू हो जाता है कि इफ पर्टिकुलरली द ब्लॉकिंग, आई थिंक सऊदीज पे हो गया था 16 पीसीएम के बाद उन्होंने कंसीडर किया था 17 पीसीएम नंबर, तो वो उन्हीं के करीब आ गया इतनी लास्ट एडवाइस। वो फ्लोटिंग पॉइंट के जो एंड पे जो जंक था, जो रैंडमाइज जंक थोड़ा सा था, वो इकट्ठा होता गया, जिसकी वजह से उसकी कैलकुलेशन ऑफ हो गई टू काउंटर दैट मिसाइल, उसको नहीं कर सका, मिसाइल हिट कर गया, बट नाउ वी नो। So that is the significance, and these are important, and instead of just doing that, we are looking forward to mixed precision workloads, but yeah, we got to read some papers on that. They're mathematically intensive. अच्छा, इधर दो चीजें डिफरेंट हो जाएगी। आपका जैसे साइंटिफिक या कंप्यूटर इंटेंसिव पार्ट है ना, प्रिसीजन के, वहाँ फ्लोटिंग पॉइंट 64 बिट तक जाता है, वो अलग एक्सीलेटर है। लेकिन अब जब एआई बेस्ड आ रहे हैं तो 16 और 16 FP8 को भी टारगेट किया जा रहा है। अब उसमें एआई परफॉर्मेंस थोड़ी डिफरेंट निकलती है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिफरेंट है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का डिफरेंट है। मैंने कहा आप एक्सप्लेन करें तब तो मैं थोड़ा सा कोड लिख लूँ, सॉरी। ओके, so if you want to offload a for loop to GPU, this is enough. हमने वही किया है कि pragma OMP parallel for जो हमने कल किया था to get done for multi-core, but we have just said कि यार ये target पे चला दो, okay, and target is mentioned in target क्या है हमारा, उसको फिगर आउट करने के एक तरीका है, एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम कंपाइलर से पूछे, कंपाइलर would give a separate utility to tell us about what kind of targets we have. Yeah, LLVM on device info is the LLVM's way to tell us that. GCC में हम क्लस्टर में देखते हैं, this is for GPU, जो कि ये पहले चार जो है ना, ये
for us developers. I'm sorry. Yup, yeah, internal, just to have fun, a fun reference to play with. And but then we have TestDevice 4, which is CUDA RTX 4070 Ti for GPU. Yep, there's one GPU here. Nice specs. So there's no other way of telling कि हमारा किस पे चल रहा है, किसके लिए, किस particular architecture के लिए compile हो रहा है program. There is a way we can look into intermediate representation of compiler, but like there's no way to exactly know. Okay, which is a little confusing even for me. But then again, we can make sure by using compilation command. Let me see. सर आप NVC से कंपाइल करते हैं? NVC एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉरी मैं आपकी हिस्ट्री जी सर yep so we can see that we are asking for SM86 architecture. ये documentations में लिखा होता है कि आपने किस नाम से रेफर करना है चीज़ों को. Again I cannot tell, only vendor can tell. Intel की NVIDIA की documentation अच्छी है, जिसने भी ये काम किया है सब आपने किया है या स्टूडेंट्स ने किया है, they would have figured out. How did you know कि यहाँ पे SM86 लिखना है? ये उसकी आर्किटेक्चर जो हमारे पास आर्किटेक्चर या जो आर्किटेक्चर है उसका रिप्रेजेंटेशन कोड है ये. So मतलब ये उस आर्किटेक्चर यानी कि एडा आर्किटेक्चर उसके लिए ये आर्किटेक्चर बताना है. स्ट्रीमिंग मल्टीपल प्रोसेसर डिफरेंट भी था, लेकिन हमने इसी आर्किटेक्चर को सेट किया है और जो वर्क पे काम किया है. वर्क कोड I guess mathematical ये फोल्डर्स हैं? नहीं सर ये तो एक ही कोड है. ये ओपन ये OpenACC based है. Anyway, we can do it. We can do it. नहीं, there's no keyword there. We can figure out in a moment. Sorry, sir. Yeah. लेकिन इसमें the question जो data transfers है ना हमारे, for example जब हमने buffer move करना है, वो उनके constructs important है. Okay. और वो उसकी अपनी भी instructions हैं. Pragma, OMP, data, target, data, etc. But let's but I'll get to the specific pragma later, specific directive later. But if we want to add a clause to the current target one, उसमें अपने लिखना है data map to from अपने buffer का नाम, for example A है,
क्या सिंटेक्स है? विल सी सिंटेक्स, एक कॉलम उसकी लेंथ होती है विच इज 1280. From we lost ChatGPT. So, like you get the idea कि हमने डाटा मैप के दो keywords लिखने हैं, and then we have to tell pointer क्या है और क्या length आपने मैप करनी है. And then we have two more things here, to from. This says कि जब इस ब्लॉक में एंटर हो तो पहले डाटा इसके अंदर भेजो, और जब इस ब्लॉक से बाहर निकलो तो इसे वापस लेके आओ प्रोसेसर में. Okay. We can just do to. We can just do from, or we can do to from. अब हम करें ना. So there are all sorts of ways, and they are important because if we skip it, तो वो जितना भी अंदर डाटा रेफर्ड है ना, कंपाइलर उस सारे को लेके आएगा, सारे को लेके जाएगा, and that is quite a bottleneck for again extra transfers हमने नहीं करना. And that's what we are trying to avoid here कि यार ये सिर्फ अंदर लेके आओ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बाहर लेके जाओ, अंदर जाने की जरूरत नहीं है. Or there's one more. ये मैप है और एक allocate क्लोज भी है. ओके, ये अंदर ही allocate कर लो ये b और इसकी जो है ना, इसकी लेंथ, ये इसको बाहर ना लेके आना, जस्ट अंदर allocate करो, इंटरनल कंपटीशन करो, और किसी और चीज a में वापस रखे हो, a भेज दो, b ना मेमोरी से आएगा ना बाहर जाएगा. We need to tell that to compiler, नहीं तो compiler काफी reserved रहता है कि मुझे नहीं पता कि b बाहर से लेके आना है या नहीं, तो वो बाहर से ले आता है, just to make sure. Things become really fast if we manage these things ourselves. Yeah, I was waiting for ChatGPT. No, Gemini. At least we have an alternative now. No, मेरी WhatsApp की अपडेट भी नहीं आई हुई अभी. आपकी अपडेट आई है उसमें, लाइक चैट एक नई आ गई है, या मेरी नहीं आई अभी तक. अच्छे फोन रखे हुए आपने. नाइस. क्या दिस एग्जैक्ट सिंटेक्स यार, ये टारगेट pragma पे टारगेट डेटा मैप एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या है? आई डोंट नो, आई फॉरगॉट. Yeah. Let me see if I can read documentation still. बस टाइम ऊपर तो नहीं हो गया? पूरा पूरा वो समझ लेना पड़ेंगे. वो क्या है कि अगर आप क्या है, जी सर, देख लेते हैं.
लीसा भी देखिएगा। तो मैंने एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट कल शेयर किया था, उसमें भी हो सकता है। सर यहाँ पे इंटरनेट स्लो आता है या इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आई थिंक हम सब कनेक्ट होते थे ना इसलिए। मोबाइल से चला रहे ब्लॉक पे ब्लॉक भी नहीं चलता, और भी कुछ सर वीपीएन को कर दीजिए हमारा Like these are just, I'm not sure. So yeah, these are just minor details के किस तरह उसको लिखना है, आगे पीछे करके इसी तरह कुछ लिखना है. But you get the idea के what is required. The writing this syntax is easy. Debugging it is hard. Making it performant is hard. Okay. Let's see अगर हमारे पास क्लस्टर में कोई पड़ी है एप्लीकेशन, सर कहाँ पर करें? नहीं सर मैं वो ढूंढ रहा हूँ OpenMP बेस्ड हमारे पास नहीं है यहाँ पे. OpenMP based Oh. चीटिंग करूँगा. तो साहब एक स्पेसिफिक लेंथ कैसे मेंशन करनी है? यानी जो टू फ्रॉम के साथ है ना, अभी वो आई थिंक फुल ले आएगा एन. टू फ्रॉम के अंदर एन होता है, जो लेंथ होता है ना उसके अंदर होती है. जो मैप टू और फ्रॉम लिखा है ना इसके साथ लेंथ भी आती है. आस्क इट ये बता देगा. अच्छा, a few more minor concepts. First is that सिर्फ टारगेट लिखने से हमें मल्टी थ्रेडेड होने नहीं वाला. ठीक है, उस ये सिंगल एक थ्रेड चलाएगा ऑन द टारगेट. अगर हम ये ब्लॉक अगर मैं ये ना लिखता तो okay, I had to rewrite that. But still there are a lot of optimizations particularly for GPUs that are possible. And उसमें एक जो higher granularity पे different SMs हैं, they can be called teams. Like they are called teams. Okay, but for different accelerators के लिए different ये होगा. For example, मैं DP पे काम करता हूँ तो it's meaningless there. Okay, और उसपे जो उसके जो closer granularity है, अगर हम उधर block level पे, warp level पे multi threading, multi processing जा रहे हैं तो वो distribute का keyword use होता है. Okay. देखिए एक फाइल बनाई जी सर मैं देखता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लूँ. So it's not necessary कि इन दोनों keywords को आप यूज करेंगे तो ही परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगी. I try all the options to see किस तरह परफॉर्मेंस मिल रही है, without teams, without distribute, with team distribute. And there's one last layer which works for both processor as well as
I'm just moving this to next line for clarity. SIMD. What is SIMD? Single instruction, multiple data. Nice, ये सबको पता है. But how? What are some names for SIMD in processors? Vector instruction. यार आप तो बनाते हो ना. cheating कर रहे हो. AVX Intel का है. ARM का SSE है. RISC-V का vector instruction set है RVV उसको कहते हैं वो. So what it does is that the very fine ALU, the processing unit, it has capability to compute things like about 512 bits at the same time. So it's not like a GPU. एक time पे हमें 1000 elements compute crunch कर देगा, but let's call it a vector instruction. And Intel इसको AVX कहता है. उनकी specific बहुत APIs हैं to leverage those. लेकिन अगर आपने OpenMP में उसको leverage करना है, तो you gotta use this SIMD keyword. Usually होता ये है कि for बाहर करते हैं use, मतलब और अंदर वाले for के साथ SIMD use करते हैं, because उस final granularity पे हमें SIMD instructions का ज़्यादा फायदा होता है, instead कि हम पूरे बड़े वाले loop में SIMD instructions सबको SIMD enable करें. There's one last keyword that I really want to share before I forget about it, and I forgot about it. SIMD की कर लिया हमने. Why did I forget about it? Collapse. What does it mean to collapse loops? You mean loop unrolling? Yeah, something like that. Loop unrolling. If you write a quick code like okay. This is equivalent to this, right? Yeah, both of these are equivalent. Same iteration से चलेंगे. और अगर हम अंदर indices को भी सही तरह manage करें तो they are the same. But to compiler they are different. पिछले वाले के केस में we keep branching, we go up, go back, go up, go back. This particular thing, जब branch predictor pattern learn कर लेता है कि यार आगे जाना है, फिर उसको pattern unlearn करना पड़ता है कि नहीं अब तो पीछे जाना पड़ना है, फिर वो दोबारा learn करता है, फिर जाता है. तो if we collapse things, so okay, if we use the keyword collapse here, that would do what I just did. Okay, pragma OMP parallel. यहाँ पर मैं लिखता हूँ collapse 2. कि जो नीचे वाले दो loops पड़े हैं ना, और इसको collapse कर दो. That would do that same thing. वो एक loop में convert हो जाएगा और वो सिर्फ एक ही दफा बड़ा सा loop चलेगा. हमें नजर दो आ रहे होंगे लेकिन compiled वैसे होगा. So again, if you know branch predictor, then collapse makes sense. Otherwise, you'll be like, why are we adding this extra stupid keyword?
where is it helping me here? So yeah, these are, and you can keep exploring. There are more keywords, like they're fun to explore. But this is, I haven't seen them in codes myself. इन्हीं की variations और आती जो हमने अभी तक discuss किए हैं. Okay, so let's try to figure out if we can run an application. Oh, okay. So this is हम मैंने दूसरा सबसे share भी किया है. Example document. अच्छा उसमें गाइस मैंने एक रीड की है पढ़े OpenMP OpenMP DPU OpenMP GPU .cpp. Oh yeah, this is it. Ta-da! Okay. एक और छोटी सी ये जो फोल्डर अभी आपको नजर आ रहा है ये सारी कमांड यानी कि फाइल आपसे शेयर हो जाएंगी ये वर्किंग स्टेट में है OpenMP मल्टीकोर GPU कोर और MPI तो आप बाद में भी इजीली कर करेंगे स्लो लग रहा हो तेज लग रहा हो बाकी नहीं सर मैंने इतने प्यार स्लोली पढ़ाया मैंने लाइक कोई कंफ्यूजन है इसमें Do I even need to explain this? उसमें थोड़ा इसमें ऐसा है कि आपको एक पार्ट तो मिल गया जैसे बात है ना हमारे साइंटिस्ट अब तो मेरा मानना ही है कि ज्यादातर आपने इसका पार्ट के नीचे का जो होता है ना उसको अपने कोड में कन्वर्ट करना है मेरा मैं कहने का मकसद ये है कि वो कंप्यूटेशन वहां ऐड करेंगे जी सर पार्ट आपने बताया जी सर तो इस तरह की जब आप बाद में इंटीग्रेट करेंगे अभी तो आपको सिर्फ एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कोड मिलेगा और आप इसको you'll be able to compile and run it. And yeah, there are a lot of examples out there, and example codes at every layer from like super big projects जो कि OpenMP को use करते हैं to mini apps जो उनकी representation है, for example mini-MP, mini-MD, mini Ghost. I like mini Ghost but वो Fortran में है. And then examples, OpenMP की अपने examples document है which I was gonna show here. Like इसमें बहुत like पूरे document में examples हैं 500 pages of examples. But मुझे चाहिए devices की examples or yep, you have things like all this stuff here. So you can refer to this. Basic theory remains same. OpenMP 4 में ये भी है core में support है. OpenMP 4 में आई थी. और 4 is not that recent. 3-4 साल हो गए उसको. पुराने आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं कंपाइलर को ले उसमें 3-4 साल पहले से ये सपोर्ट ऐड हो गई थी 3 साल पहले से सॉरी वो अब Clang try Clang as your primary compiler. It's good. The community is very active. Features are they keep rolling in. सबके अपने अपने Slack channels हैं उसमें आप कहते हैं यार ये फीचर है अगर वो नहीं भी है तो कहेंगे यार नाइस आइडिया ये ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल रिसेंटली उनके Slack में डिस्कस हो रहा था कि ये जो प्राइवेट है इज देयर अ वे कि जब कंपाइल हो तो इन द एंड सब रूल्स को मिला के बता दिया जाए कि which variables are private and which are shared. तो the maintainer was like यार है तो नहीं कर लेते हैं and so they're adding that now. It's a great community. So we rolling back to where we started from is that the free launch is over. हमारे कोड अब खुद तेज नहीं होने वाले. We gotta understand the computers of future. We looked into some computer architectures. Recent examples M1 की किसने दी थी? Because it was a great example. It was a great example. उसमें asymmetric cores, GPUs. If you wanna
make use of the entire silicon, we need to understand that first कि ये exist करता है and what are the capabilities of different parts of it. And B, ideally, we should strive for running as close to hardware as possible if we want to make it high performant. But since हमारे अपने resources और time और सब चीजें limited है, we have tools like OpenMP to help us with that. OpenMP में there are both multi-core technologies, multi-core way, parallel fork to run things in parallel. अगर आपके जो workloads हैं वो asymmetric हैं, then you can do tasking. हम higher granularity पे tasking कर सकते हैं and उन smaller tasks को multi-core से चला सकते हैं. So we can do a mix and match there. And then we have on one node we have accelerators. अगर हम pragma OMP target लिखते हैं, so it goes to the accelerator out of the box, but you have to understand what your accelerator is capable of, and then map those capabilities to what OpenMP semantics are. For example, GPU में there are layers of parallelism, जिनको exploit करने के लिए we used teams distribute. And SIMD again, अगर हमें नहीं पता कि processor is SIMD capable, वो 512 bits को भी 512 बिट में कितने 32 बिट फ्लोट बनते हैं ईशान साहब? 64. I think, yeah, 64. 64 बन जाते हैं? Wow. If you talk about elements, हाँ, 64 elements हम इकट्ठे कंप्यूट कर सकते हैं पूरे वेक्टर में, which is an amazing thing to do. We just didn't know कि वो प्रोसेसर में पड़ा हुआ है. So once we have optimized our code to the best for one node, and we evaluated कि यार okay पूरी simulation को run करने में अब लग जाएगा 1 साल, we cannot wait 1 year for 1 year to fold the coronavirus protein or unfold any drugs to see what kind of elements they're composed of. We just don't have those kind of timelines. So what we do is that हम 1000 computer इकट्ठे लगाते हैं and we distribute data over them and we keep iterating, share data, compute there, synchronize, share data, compute there, synchronize. हमें उतने X performance तो नहीं मिलती, but it's still, if we can go above 80%, it's really good. 90% को touch कर लिया तो भी क्या ही बात है, like it would be really awesome. Again, we need to understand the entire system to get the most out of it, and the ecosystem is again changing as Antonio described yesterday. हमें खुद नहीं पता हम कल को क्या करने वाले हैं, how are we gonna help folks with all these complexities that are already in research production, but we are trying our best to enable scientific community with easy programming models like OpenMP and MPI. आर्किटेक्चर में होती है, आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन में वो खुद ही इंटेल बताएगा आपको. मैं और मार्केट करता हूँ 512 बिट का मेरा AVX है, ये we are gonna make another new AVX 10. It's still gonna be 512 bits, but it's better. That's what they just said. So yeah, they're really proud of these, at least in my community, these vector instructions. Interestingly, BSc काफी सालों से 30-40 साल से ना, असल में कंप्यूटर नहीं होते होंगे, बहरहाल वो काफी 20 साल पहले से शुरू से. One of the founding projects was VPU, Vector Processing Unit, and it had been discarded for long
लोग कहते थे कि भाई कोर के अंदर ही कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज कर दें, we're just going to make things faster, clocks are going to get faster, why should we work on a vector processor? But they're coming now. uh, Now there is PTU, tensor processing. yeah, Basic vector processing, tensor processing. Basically, like not version we have GPU. Where more two-dimensionally and dimensions beyond the vector. tensors are optimized for matrices. They are more like systolic arrays, okay, and they are less of, so graphics vectors are not as parallelizable. वो again हम 64 elements is not big, okay, but then again वो core के अंदर है, डाटा वहीं पड़ा हुआ है, हम वहीं से compute कर रहे थे, हमें GPU पे डाटा मूव करने की जरूरत नहीं है, okay, but it's something. GPU पे हमें ज़्यादा बेहतर parallelizable performance मिल जाती है given our workload is parallel. TPU we don't do, we can use TPU for parallelizing things, but it's not meant for that. TPU is meant for FMA of fuse, multiply, and add for matrices. It's like very much skewed around those matrix workloads, which are essential for AI. GPUs help us with a lot more generic scientific workload as well. Again, TPU, we don't have TPU access, so we cannot program TPUs. They give TPUs as service, but they don't give TPUs as devices. But tensor for NumPy and GPU for you can run their code in TPU as well. Yes, but I'm just saying कि वो libraries देंगे, हम चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई software stack is out या devices are out. Devices मेरा नहीं ख्याल कि consumer या even industrial use में है. They give devices as services. So इसलिए we don't consider TPU much, particularly in research community, क्योंकि it's closed. It is very close. Yeah. आपने ये कोड लिखा है जैसे DCC पे चलाया तो DCC में यूज करते हो कैसे अगर हमारे पास ड्राइवर इंस्टॉल या ड्राइवर है ही तो फिर DCC क्या करेगा? OpenMP का एक फंडामेंटल रूल है कि अगर कोड में जो प्रैग्मास हैं वो एनेबल्ड नहीं होते, उसके लिए हार्डवेयर नहीं अंडरनीथ, तो it falls back to a non-parallel implementation. And I've seen the intermediate representation जो कि compiler Clang use करता है for these, उसमें दोनों implementations पड़ी होती हैं. If one fails, तो वो दूसरी serial वाली run कर देता है. और ये कोड अभी एनवीडिया की या AMD के DPUs या Clang में I can tell about Clang. I'm sorry, मैं उनकी चुके internal circles में तो Clang is very good with support on both AMD and NVIDIA. Yeah, and they are, I'm not sure you can explore. They have even developed techniques like अगर आपके पास इसी तरह से कोई CUDA कर्नल है तो pragma OMP कर्नल या इस तरह का कोई उनका कंस्ट्रक्ट है जिसमें आप CUDA का कोड लिख सकते हैं उस पैराडाइम की assumption के साथ, और वो चल जाएगा. There's there was another presentation recently, उन्होंने ये किया है कि आप हिप में या CUDA जिसमें भी लिखें, you can make your code end up in any backend. Either you can run CUDA code on AMD or AMD code on CUDA, because code जो होता है वो convert तो intermediate representation में ही होता है compiler की. तो compiler boys ने कहा कि यार why stick to one backend for one programming model? We can just convert to another backend.
We don't have a problem with that, and that's what they did. So these are the latest stuff that's going on in compiler community. ये ठीक काम कर रहे हैं स्पेशली हमने बहुत देर तक ना जब इवन शुरू के टाइम में एनवीडिया ने अपना आर्किटेक्चर शेयर नहीं किया वो तब के बाद तब काफी मुश्किल आ Yes, sir. तब काफी टफ था. They were not doing directive-based. तो OpenACC start किया था. NVIDIA के retired people who moved on from NVIDIA, they started OpenACC, जो कि बिल्कुल exactly इसी तरह की चीज है, but they knew what it looks like from inside, so they could develop it. And now OpenMP has caught up to that. But still, if you are really into accelerators, look into OpenACC. बिल्कुल same चीजें हैं. वो टीम डिस्ट्रीब्यूट को वो गैंग कुछ कह देते हैं. गैंग सर क्या होता है? गैंग डिस्ट्रीब्यूट. जी सर, जो OpenACC में होता है गैंग, वो वर्ड्स डिफरेंट है, मीनिंग सेम है. So that's what it's all about. I hope you would have developed some appreciation for HPC by this time, and I really